दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, we are very confident that and we are conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। So they are going side by side, and this is again a very healthy sign that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, and we are sure that we would make it a very overwhelming experience for our voters. And then the voters delight, पोलिंग स्टेशंस इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें। Then how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो
वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आए। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट is what is our commitment to the environment. We are also greatly leveraging technology in 3 verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies, machinery, and also for the political parties and candidates. कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम, वी वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्व्स। आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे।
तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसिल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं, और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, how to control the menace of misinformation, and how to control the violations which are done or alleged to be done under MCC. So coming to the muscle power को control करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं. We are establishing, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन. और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे. हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल. सो one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें. जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है. साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है. देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर-स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर some kinds of irregular, illegal goods can move across the states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए. हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले. और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो. ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें. किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे. बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे. डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है. बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें. साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं. चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है. राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. Only peace is everlasting. Violence doesn't solve anything. We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आउटकम्स.
3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है। एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव। ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द instructions and guidelines of the BCS, almost equal to the commercial airports, checking होगी। Railways, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at roads. So, cash और money जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस। व्हाई नॉट? इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, क्रिटिसाइज अस, बट you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं।
तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें। इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side, but there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको educate करेंगे कि ये उसकी reality है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम। चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स, एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं। आई मीन स्टेटमेंट्स which should inspire rather than divide, issue based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements, or मैस्करेडिंग एज एन एडवर्टाइजमेंट एज ए न्यूज। इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर।
अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन. दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी? किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन्स. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा. डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रैंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी randomizing the force. Entire election machinery will be randomized in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting? हमारे elections कैसे होंगे? So, let me show you this. What is our effort? What is our endeavor? As a last slide, let me tell you. There are reduced repolls, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, इस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. With this, I would like to in the end appeal to the voters that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में.
आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। एंड लास्टली, my appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। विद दिस, आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर very sincerely. This is what I have seen in now 3.5 years. You are our natural allies. You are eyes and ears. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं। आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं। प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए। ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज। कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे। नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू वर वेटिंग, एंड आई होप I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में
नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the Assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश that please join for the voting, come on the day of voting, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April
एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7 मई। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 मई। Date of counting in the entire country would be 4th June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और 5th phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th जून। इट विल लुक लाइक दिस, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th April and finishing on 25th May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज notification will be on 7th May and polling on 1st June. So last polling would be on 1st June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, 1 फेज होगी, और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे। So we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए जो। Yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे?
आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए जो, हाँ, या जस्ट होल्ड ऑन। सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। दिस लेडी इन द फ्रंट, या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ, इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए, हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the fourth row over there with that black dress, उनको दे दीजिए, माइकर्स, मिडिल में, हाँ, उनको जो बीच में है, वो लेडी जो है, हाँ, give it to her, yes. Switch on your mic. इन्हें माइक ठीक करके रखें। What are they doing? Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand, from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from it. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will move, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड
We are extremely careful of what he has asked. If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently. We have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll, on the expenditure side, take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है, तो और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो तब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है, वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन हैं। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness, and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए, हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है
कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman who is holding both his hands up, उनको दे दीजिए। थोड़ा जल्दी दें। Yes sir. माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें। थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है, वो हाथ उठा रहे हैं वो। जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल? Okay, so there you have, the Election Commission has given us the poll schedule for the big elections of 2024. General elections 2024 for the 18th Lok Sabha will commence with voting on the 19th, 19 April, Friday the 19th, will conclude on the 1st of June with the final countdown, the counting taking place on the 4th of June. So that's the big story that we have for you. From the 19th of April all the way to the 1st of June is when the general elections of 2024 will take place. Those are the dates to look at: 19th April, 26th April, Friday, then 7th May, so a bit of a gap of 10 days, then the 13th of May, 20th of May, 25th of May, and then 1st of June. 3 states, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh, will have a 7th-phase poll, but all the others will have a counting, all the other states will have shorter phases. Remember, Andhra Pradesh will have assembly elections along with Lok Sabha, that's on the 13th of May, and Odisha will have a 2-phase poll, 13th and 20th of May. Counting 4th of June. So remember, last time counting took place 23rd, so we've now got counting taking place almost 12 days later compared to what it was in 2019. Rajat Sethi joining us, political commentator. I'm also joined by Javed Ansari, senior journalist. To you, Javed, first, your first takeaways, anything that strikes out for you? As I said, it seems that the poll process, if anything, is only getting more and more elongated, and we are now going right into the month of June. Yes, it is, and it's on expected lines.
But there is one question that still remains unanswered. I don't know if somebody will ask the EC, or maybe he'll volunteer with information. What is the hesitation? What prevents the EC for going in for 100% VVPATs? That is something, the Election Commission has gone to great lengths. The Election Commissioner has gone to great lengths to try and protest his innocence, prove his innocence, prove that there is a level playing field. Well, if you've done so much, then what prevents you from taking the final step? Provide VVPATs, a paper trail for every vote that is cast. So then, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. So, the Chief Election Commissioner has still not answered that contentious question of VVPAT. At least I didn't hear it at the press conference. Javed Ansari saying what stops the Election Commission from doing 100% VVPATs as has been asked for by the opposition parties in particular. The government would say, or the EC seems to suggest, that would be double counting. Essentially, you would be doing both you would be doing both EVMs and paper counting as a result, Javed. So there's no harm, so long as it proves beyond any reasonable doubt that elections were free and fair. It is worth the wait. Okay, let's get another view. Rajat Sethi, do you go along with what Javed Ansari said, that the Election Commission, apart from EVMs, should be doing 100% VVPATs, which means the verified paper trail will be right across every polling booth and not randomly selected ones, as has been the case in recent times? Well, logistically speaking, would it be possible, not possible, is something that the Election Commissioner can only answer. But, so far we've seen that all the audits that have been performed on all of these VVPAT machines have largely been pretty well accepted by the public. And, that randomization test is still on. And I think from a logistical standpoint, this seems to be a safe middle ground. Ideally, yes. I mean, if everything else, especially on handling the logistics is sorted, you can eventually look at another general election where VVPAT would be compulsory. But I think for now, this seems to be a settled issue. What is going to be interesting to watch is that this long extended cycle going all the way into deep summers of India. North India would be in the grip of Loo as well as summer waves. So far, elections have largely concluded by 23rd, 22nd May. But entering into June would be something interesting to watch out as to how does the voter turnout get impacted because of this. Mr. Atal Bihari Vajpayee and Pramod Mahajan for that. If you recall, in 2004, the election cycle was to take place in October. They preponed it by 5 months under pressure, they say, from Chandrababu Naidu at the time, who wanted Andhra Pradesh election cycle to coincide with the general elections to take advantage of the Vajpayee image. And guess what? Both lost. Chandrababu lost to Y.S. Rajshekhar Reddy, and so did Atal Bihari Vajpayee. So if we are to blame anyone for the summer election, we should turn to Chandrababu ji, since both Pramod Mahajan and Atal ji are no longer with us. Javed ji, that you are a lucky man, that you are now semi-retired, if I may use the word. I know good journalists never retire, but that was a better time to do elections, Javed, October to December. Look, nothing gets a political journalist juice flowing than covering elections. Whether it is the height of winter or summer, if there were elections, I at least loved it. I loved sweating it out, especially in the dust bowls of UP and Bihar and Northern India. So I quite loved it. Yes, in an ideal situation, if it was, in winter, then there is this issue of fog and in some parts there's, it's so cold that people are reluctant to come out. So be that as it may, I think people in India... We're trying to get your audio fixed, Javed. We're having a slight problem with your audio. We'll just get that fixed in a moment. Just to also say, there was some reports suggesting that maybe the Election Commission could go with simultaneous elections also for Jammu and Kashmir. Remember, the Supreme Court has said that assembly elections should be held in Jammu and Kashmir by the end of September. And there were some suggestions that maybe the Election Commission will explore the possibility of holding assembly and general elections together. That's been ruled out clearly with this schedule. So you'll probably have
August, September being the months where more likely elections will take place in the state of Jammu and Kashmir. But those are the numbers that, as I keep, those are the dates that matter. And stretching into June, remember monsoon also comes in certain parts of the country, but Kerala is in the earlier part of the election, so that shouldn't be a problem. It's going to be North India that's going to be awfully hot. There are those who suggest you could be heading for one of the hottest Mays in June ever. That's the climate. The political temperature also, of course, will continue to rise. But Rajat Sethi, who does, in your view, an elongated poll like this help? Does it help the BJP because it simply has more resources? I mean, it's if you look at, I've just got the map where the phase-wise distribution is made. And it's a pretty interesting graph. I haven't seen this kind of a movement of forces yet. I mean, so the biggest planning that the Election Commission has to do is to how do you move your security forces from one corner to the other corner, phase by phase. And that is the biggest consideration or sort of the constraint that an election commission has to operate with. They're starting off with Tamil Nadu. They're also clearing, I think, parts of Chhattisgarh. They're also getting entire Uttarakhand done in the first phase and half of Rajasthan. So they're all like in 4 different places. They're going to concentrate security, central reserve police forces, and then try and move them in and around various corners. We are also seeing Northeast. Bunch of northeastern states are going into elections early on. So you can imagine that even in the Northeast, where security remains a concern, the first Arunachal Pradesh will finish off, Nagaland, Assam, part of Assam will also get over, and then Manipur. Half of Manipur is getting over electorally in the first phase itself. And by second phase, you will have almost the entire Northeast done. We are also seeing that so you're basically saying that some of the states where security is a concern get over pretty early. Yeah, you're getting them out of the way in the first phase. That's what I'm saying. That often happens, and of course the big challenge remains states like West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar. It used to be really Bihar, then it became Uttar Pradesh, and now it's West Bengal. These are the 3 states where you will have a 7-phase poll. Let me just go to our correspondents for a moment. Suryagni Roy is joining me from Kolkata. Also joining me from the national capital is our correspondents here as well. But first you, Suryagni, tell me expected lines that you will have a 7-phase poll in West Bengal. It was 7-phase last time as well. Are you getting any reactions there from political parties in Kolkata? Well, even in 2019, it was a 7-phase elections, and popular belief was that yes, it might turn out to be 7-phase or maybe a 6-phased elections, and that's what it turned out to be, 7 phases. The Trinamool hasn't reacted so far, but let's not forget that when the ECI officials were over here, they had specifically met them, and in a written letter to them, they had said that let's do only 1 phase, because you have almost you have 920 you're sending 920 companies of central forces for the election. So let's do it in 1 phase. But it's not 1, it's 7 phases. And yes, this is a very important aspect of the elections that we'll see over here in West Bengal, that 920 companies of central forces will be deployed for the elections in West Bengal. I think that, it is the highest. Second is Jammu and Kashmir, where 600 plus companies will be deployed. So that gives a sense of things, how the Election Commission of India is looking at West Bengal. And mind you, when the ECI chief was speaking, he mentioned that no bloodbath, no violence will be tolerated. We had seen in 2019, there were multiple reports of violence when the elections were happening in West Bengal. So that will be a very, very important aspect to see what happens with so much of central forces that will be deployed. And in a short while from now, we are expecting that the Trinamool Congress will be coming out with their own version. And we will not be surprised if they are not happy with the 7-phase election, because they wanted a 1-phase election. Back to you. Okay, let's go now to Amit Bhardwaj. He's been standing by here in the national capital, also joining us
is Abhishek Mishra from Lucknow. But to you, Amit, Delhi votes I can see on the 25th of May, that's in phase 6, just one day after my birthday. So I will have my get my birthday present by voting early morning on the 25th in Delhi. You're at the Congress headquarters, I can see, at the moment. Any reactions that you're picking up to a 7-phase election? Well, Rasdeep, Delhi is definitely voting in the 6th phase, that's towards the end of the 25th May. And the reaction from the Congress party is expected shortly from here on. There will be a formal press conference where the senior leaders of the Congress party will be not only responding to the 7-phase elections, but also in the manner and fashion the entire election has been, strategized by the Election Commission of India. Also on the questions of VVPAT, paper counting, all that, possibly the reaction from the Congress party will be coming in. And very interestingly, there could be suggestions or comments made by the Congress party also about the state elections which are to happen in different states around the Lok Sabha election itself, including that of state of Andhra Pradesh and Odisha. The big leaders of the Congress party, the stalwarts of the Congress party, are possibly focusing right now for the mega rally that is to happen tomorrow in Mumbai. And what we are given to understand is that shortly from now, the Congress in the AICC, there will be a press conference very soon. So we'll be getting the first reaction of the Congress party as well, as far as the Lok Sabha elections are concerned, the phases are concerned, and the strategy that has been deployed by the Election Commission of India for the general elections. Coming back to the national capital, it's a very interesting battle that is expected out here. The Aam Aadmi Party has already declared 4 names. The 4 candidates have been announced, but the Congress is yet to announce the name of the 3 candidates who are to be fielded in the national capital. And today, the election dates have been already announced. So that also speaks a lot about the preparations as to in what state things are in the national capital. Back to you. Interestingly, and I'll ask my producers in a moment to put all the details state by state, because I think whichever part of the country you are, you need to know when your voting is. We just spoke about Delhi being on the 25th of May. Just to tell you, Karnataka will vote in 2 phases on 26th April and 7th May. Karnataka, if you're in Bengaluru, Mysuru, it's 26th April and 7th May. Tamil Nadu, if you're in Chennai, Coimbatore, will be on April 19th. So Tamil Nadu, one of the few states, single phase, Tamilians known to conduct elections very efficiently. Andhra Pradesh, remember it's both Lok Sabha and Vidhan Sabha here, big fight there, 13th of May. Telangana also neighboring state on the 13th of May. If you're in Hyderabad, put it on your calendar, 13th of May. Producers do put each state also now one by one on our graphics. And Kerala, 26th April. So Kerala done and dusted in one day in April. Tamil Nadu done and dusted in one day in April. So Tamil Nadu will be over on the first day of the polling. So the 2 states where the BJP is weakest, many would believe, Tamil Nadu and Kerala, they didn't open their account in both these states. That's over and done with. The Prime Minister's southern push will be over in the very first phase itself. Interestingly, Karnataka also gets over pretty early by the 7th of May. So basically, southern India is over by the 13th of May. So the first 3 weeks will be southern India, and then the battle shifts to the Hindi heartland. If you're looking at it geographically, that's how you've got to see it. Abhishek Mishra, you're there in Lucknow. 7-phase poll in UP as well. Again, no surprise. It was what, 6 phases last time? Or 7 really last time as well. So UP and Bengal and Bihar are the 3 states that the EC will take particular care of, either because of fear of violence or just the sheer size of these states. Well, absolutely, Rajiv, and that is why Uttar Pradesh is once again going to vote in all 7 phases. The voting will begin from the western part, usually it begins from there, and will move towards the Awadh region, and then ultimately as the eastern Uttar Pradesh, that is the home ground of Prime Minister Narendra Modi. Now, what is also very interesting is that Lucknow, the capital, will vote in the fifth phase.
and Varanasi and the other very important parts of the eastern phase will be voting on the last phase, that is on 7th. So particularly, it's a massive, preparation on the ground as well. We have seen how BJP has already begun their preparations on the ground. And even, in terms of numbers, UP has always been very significant. And the deployment of the security forces and to make sure that the election is smooth, such an arrangement has always been witnessed. And it is once again very, very much evident. What is also very important is now we will certainly witness now, one by one, how immediately now the tickets will be announced, because India Alliance so far, barring some of the seats by the Samajwadi Party, the Congress has not yet revealed a single candidate in Uttar Pradesh. They're fighting on few seats which were given by Akhilesh Yadav in the as part of the alliance. Also, Mayawati standing all on her own. 9+7 candidates has already been given by her. So that is something which is also interesting. A lot of heat to this election. Indeed, last time she was along with Akhilesh Yadav, a Mahagathbandhan, but this time it's between BJP, India Alliance and Mayawati, in a way will certainly affect the voting trends and also the vote share which she's claiming to be. So that is what is very important. And another thing is that the accumulative vote share of Congress and Samajwadi Party, which last was approximately 24%. So if they are going to exceed that and in alliance, that is something which remains to be seen, because BJP has already touched 49.98% of vote share in 2019, and this time they are all set with Mission 80, which is their claiming, but practically also it looks very feasible for the BJP to get at least 70 plus in Uttar Pradesh, and that is why all these 7 phases are going to add on to the big tally of the BJP, which is ultimately 370 plus, which the Prime Minister has all openly, challenged. And at the same time, UP once again will be very significant, adding on to the victory of the BJP if they are looking at it. Yes. Okay, Abhishek Mishra saying how the road to Delhi always leads through Lucknow. So the BJP aiming big there in UP. Most polls giving the BJP as of now the big advantage in Uttar Pradesh. Aishwarya Paliwal tracks the election commission for us. There was a question, Aishwarya, that Javed Ansari had asked earlier and said that we should be asking this to the election commissioner, that why aren't you having 100% VVPATs? Why this has been a demand that some of the opposition parties, Congress says the chief election commissioner has not responded to their letters. Did anyone ask him that? Is there any possibility of a more expanded VVPAT verified paper trail with EVMs this time? But let me tell you one thing, Rajdeep, this is a question which some people obviously have been asking, the opposition parties also, but one of the practical implications of the VVPAT, and this is what the Commission says at the moment, is that the duration of the elections will become longer, and they also say that whenever the VVPATs are opened and the tally is being done, that time the political agents at the moment are always standing in those rooms where the verification takes place. So they say that when this is already being done, then at the moment they don't feel a need that VVPAT should be 100%, and also they say that if you want to take out the slip and if the people just want to physically examine the slip, there are high chances that some people unknowingly might just keep the slips in their pockets, might carry them with them. Then a second problem will arise, that the number of slips and the number of votes will not tally. So that's the practical example that the Election Commission has been given. But yes, the opposition parties have been asking for it, at least not in this election, but yes, we can expect, them increasing it by at least 10 to 20%, but in coming elections, at least not in 2024 elections. So what is the big new thing that you picked up? Is there anything new in 2024, Aishwarya, that we didn't see in 2019? Well, one of the biggest things, Rajdeep, the big takeaway for me from this Election Commission press conference is the immediate takedown that will take place of content on social media. They have more than 2,000 people who have been appointed as observers. They have been given the power. So, for example, if there is something that a political party tweets out which is misinformation, then that officer has the right to take down the content immediately. The political party can obviously submit an application. That is a different thing, but immediate taking down of content will now take place on social media platforms, and the Commission has reiterated that this time they will make sure that no leader, no political party is spared. If there is something that the Election Commission catches, even if it's cash or even if it's something, small mistakes on social media, that is something which will not be allowed. So if there is any kind of misinformation from any candidate, from any political party, it will be taken down immediately. The officers have now been given this power. Rajdeep.
let me come to Kamaljeet, who's been standing by for a while. Kamaljeet, you're in Chandigarh. Temperature is going to rise with every passing week as we get into summer. Punjab goes to the polls in a single phase. Well, it's a long-drawn battle, and remember, 28 are the seats from this region, minus J&K. So we're looking at Himachal 4, 10 in Haryana, 13 in Punjab, and 1 in Chandigarh. And obviously, there's going to be a high-pitched battle in Punjab. Bhagwant Mann has already stated it's going to be 13-0. Now, there seems to be a lot of agitation as far as the farmers are concerned. Which way it's going to be? As per the grain is concerned, Punjab has always voted against the centre, no matter whose party it has been. We'll get you a quick reaction from Malvinder Kang. He's the spokesperson and a probable candidate from Anandpur Sahib. He could be facing Manish Tiwari if he's the candidate. Sir, do tell us, how are you seeing this? एक बड़ी लंबी लड़ाई सी लग रही है पूरा तो गर्मी के महीने में 1 जून में है वोटिंग. Definitely, it's a very long schedule of general election, but it's a very big responsibility for the voter of this country. 13-0 आप बोल रहे हैं, so your competition is with BJP, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी. आपका तो कांग्रेस से एक बार में अलायंस होने वाला है. नहीं, पंजाब में तो डेफिनेटली जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम पंजाब बनेगा हीरो और पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी 13-0. तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता हमारा कोई बहुत ज्यादा किसी और से मुकाबला रहेगा, क्योंकि 2 साल में भगवंत मान जी की सरकार ने तमाम पीपल वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट की हैं. How are you looking at the BJP SAD alliance, which is impending, and they said since the announcement of the election, this alliance could happen anytime. Do you think they'll be able to come back together and actually give a dent to Aam Aadmi Party, considering that as far as 2019 polls are concerned, Aam Aadmi Party could only manage to win 1, and by polls you got 1. So basically, the performance of Aam Aadmi Party wasn't really up to mark there. नहीं, उसके बाद तो 2022 में लोगों ने 92 MLA भी जिताए हैं, तो वो नहीं है. जहां तक बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर का सवाल है, डेफिनेटली बिहाइंड द कर्टन दे ऑलरेडी इन अलायंस. बट द थिंग इज दैट कि जो लोगों का प्रेशर है, फार्मर्स ऑन एजिटेशन, ऑल द डिमांड्स आर पेंडिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फार्मर्स. तो अभी एक भी इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इस चीज से डर के मारे दे आर ऑफिशियली दे आर नॉट अनाउंसिंग इज. ऑलरेडी दे आर इन अलायंस. What about कांग्रेस? बिकॉज कांग्रेस के तो 8 लोगों ने जीता था, 13 में से जो मैक्सिमम था वो तो 8 था जो कांग्रेस के हिस्से में गया था. आपको लगता है कि कांग्रेस कितना पानी में है, कितना आपको लगता है कि वो कंटेंडर है? देखिए, 2019 और 2024 के हालात डिफरेंट हैं. 2019 में तो आम आदमी पार्टी की कोई सरकार भी नहीं थी और हम अभी इनिशियल स्टेज पे थे, नई नई पार्टी 4-5 साल हुए बने थे. डेफिनेटली एक क्रेडिबल चेहरा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत. So the chief minister is going to be leading that fight, and remember, this is going to be a one uphill task, no matter which party it is, whether there's going to be an alliance or not an alliance. But yes, a test of fire or a Agni Pariksha for the Aam Aadmi Party, because remember, whatever they've been talking about free bijli and the other perks and the employment, it will boil down to as to how people view them and how the farmer agitation is being viewed. Aam Aadmi Party versus the BJP. You know, well, the way it's very interesting. Delhi goes to the polls on the 25th and Punjab on the 1st. That's 6th and 7th phase. So for Arvind Kejriwal, who has his highest stakes in these 2 states, the elections will really start only in the 3rd week of May. That's where he has to focus on these 2 regions in a way and hope to get maximum out of that. Let's turn to now to Patna. Aditya Vaibhav joins me from Patna. Aditya, good evening. 7-phase poll in Bihar, much like Bengal and Uttar Pradesh. What reactions are you picking up? Good evening, Rajdeep. Of course, the elections have been announced, and interesting to note here is the fact that, like the other populous states, Bihar has been given as many as 7 phases as far as the upcoming general elections are concerned. But that being said, interesting is to note here is the fact that both the constituencies that fall into the state capital Patna districts, that is Patna Sahib and Patliputra, they will undergo polls on the very last day. So this is something very interesting that has come as far as the press conference of the Election Commission is concerned. But then, of course, after the elections being announced, it will be critical to see how Mahagathbandhan and NDA react to it, because both of them are actually struggling as far as their seat
sharing agreement or the formula concerned is concerned. Rajdeep. Interesting that in certain states the India alliance has not yet got on the dais. We're just waiting for the 3 election commissioners led by the Chief Election Commissioner to arrive, and you can see Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner. He's arrived right now, joined by Election Commissioner Sukhbir Sandhu and Election Commissioner Ganesh Kumar. So dot on time, 3 p.m. it is, and 3 p.m. it is that the election photographers commissioners to sit down after taking the still photographs. Clearly, there's a lot of media frenzy. Photographers, of course, Kindly be hankering seated. to get that first photograph out immediately of the 3 election commissioners on the dais. Shortly, we'll hear the Chief Election Commissioner, of course, Thank you. give a sense of the arrangements that have been made by the Election Commission to conduct this mammoth exercise that comes once in 5 years. Good morning, friends from the media. Okay, so while the introductions Sabha happen, is let's press quickly go conference across mein to my swagat hai. colleague Aishwarya Paliwal. That moment has arrived, It's a big Aishwarya. day today for all of us at ECI, and I would like to formally welcome you to this press conference to announce the schedule for general elections and some state assemblies. So all the media persons, of course, my clearly privilege tied up to listening introduce to the Honorable that Chief briefing, Election which is to Commissioner, shortly Shri begin Rajiv right Kumar now. The introductions the being Honorable made right Election now of the Commissioner, Shri officials who Ganesh are Kumar. on the dais. And the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years. Like I said, it's been a and while have coming played a because crucial of role in certain the run-up to the general exigencies as election. far as this announcement was Namely, concerned. Senior Deputy Election Commissioners, Shri Dharmendra Sharma. In the and last Shri instance, Nitesh in Vyas. 2019, Also, the announcement DC, of the schedule Shri was Hitesh made Kumar, Shri just a Ajay week Baru, before, Shri R.K. around Gupta, March and Shri 10. Manoj So it Sahu. comes on March 16 Another in crucial team member 2024. has been DGIT. Srimati Shortly, we'll know Geeta which Verma. constituencies Also on the go dais to is our polls Joint Director when Media, Anuj Chandak, who is 543 familiar parliamentary to most of you here. constituencies. The schedule for the I'm state G. elections of Narayanan, TG Media for Assam, the Commission. I beg your pardon, Arunachal The format Pradesh, is as follows. Sikkim, There will be Andhra Pradesh opening and remarks by Odisha the CEC along with will the also be presentation. announced. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. The PC is also opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. The PC is also being live streamed on X along with the slides and live streamed on our YouTube and Facebook. Following this PowerPoint, there will be a question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for a chance to be called by me to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your How turn, this introduce proceeding yourself and will your be organization conducted. and There'll then be ask opening your question. remarks, of course, by the I Chief request Election you to be Commissioner, who brief will and ask only one question at a time. introduce the schedule, announce the schedule for the general elections, after which So they I will be request taking you to questions deliver from your the media persons. Thank you, Mr. Narayanan. Good afternoon, friends. My recently joined distinguished colleagues, let me introduce you to them. Shri Ganesh Kumar ji on my right and on your left, and Shri Sukhbir और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All 3 of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment, when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है,
जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles,